Yeah, Amit, good afternoon. Dr. Vijender speaking from YourPedia. Yes, sir. How are you? I'm fine, sir. So, Amit, we can start for mock interview of NITIE Bombay, right? Yes, sir. You're already aware about the 3 sections, right? Yes, sir. So, me and Saklani sir will be going ahead with your mock interview. And Okay. first section is your introduction. So, I think we can start with that introduction first, right? Okay, sir. Okay, please start. Hello, panelist. I'm Amit Maurya. I'm from city of Mirzapur in Uttar Pradesh, which is also famous for its carpet and brassware industry. My father is a shopkeeper, and my mother, she takes care of my house. I completed my schooling from a native place. I always wondered how I could reduce my father's work in his business. So, for example, I prepared an Excel sheet while I was in schooling days where I registered products, their manufacturing, the expiry date, and also their price. So, I always wondered about ideas how I could reduce my father's hard work. And after schooling, I pursued mechanical engineering from JSS Academy of Technical Education, Noida. And I remember my first orientation where my principal told about creating jobs. I always have an inspiration for to become an entrepreneur, and I have multiple ideas on that. Academics was always important for me, and I made sure that I do consistently well in it. I have got myself best in class education in field of engineering, and all this has been done for doing something big. I graduated in 2019 with honors. I did my summer internship from Coach Care Center, Hazrat Nizamuddin, Indian Railway, and my BTech project was on investigating the properties of fiber reinforced polymers for riveted joints. As we know that polymers made of carbon fibers have very good mechanical properties and have light weight. Smaller components are joined to make bigger assemblies, and one of the techniques to join components is riveting. So here in our project, we analyze several parameters like quality of holes, shank of rivet, and number of rivets through several tests such as bending test and tensile test, creep test, and those all other parameters that affected our riveting. Apart from academics, I represented my group in several inter-house sports competition in my schooling days. I also took part in quizzing and reasoning tests both in school and colleges. I have passion for cooking along with teaching and helping students in their classwork. I also like to read articles about international issues and also watch boxing. I'm a fan of playing styles of Floyd Mayweather and Manny Pacquiao. And my strength lies in being positive and doing hard work. And my weakness is I sometimes get worried about my work until I get it finished. Okay, so That's it. Amit, are you done? Yes, sir. Okay. okay, Amit. Now let us proceed to the second question. And Yes, as you know, second question is related to you will be given 3 topics, and out of those 3 topics, you have to speak on 2 topics. Yes, sir. And for each topic, you don't have to take more than 2.5 minutes. Okay. Yes, sir. So first, I will give you the 3 topics, and you will let me know which one of those 2 topics you want to speak on. Okay, right? sir. First topic is digital education over traditional education. Okay, sir. Second one is, should India have one child policy? Yes, sir. And third one is Startup India. Okay, sir. Okay, so let me know the topics on which you want to speak. Sir, I would like to speak on digital education over traditional education. Okay. And other one is, sir, about the second question, sir, what it was? Should India have one child policy? Yes, sir. So should India have one child policy? So you want to speak on this also, right? Yes, sir. Okay, then go ahead with the first one, that is digital education over traditional education. And your time starts now. Okay, sir. So digital education, as we know, it is getting prominent
in India. Also in this situation where we are in a house sitting away from our classrooms and all. And here in digital education, we have opportunity to learn different subjects from different teachers all over the world, which we couldn't get from our traditional education. Digital education also provides a lot of sources like recorded lectures, videos of different institutions, and other study materials that could help, which we don't get in traditional education. Imagination also gets better in digital education, where we get to see things in front of our eyes while studying. For example, if we are reading any example, and if we get imagination of it, that will help us quite good in getting that concept. So this is one of benefit which I think is very good of digital education apart from traditional education. And digital education can also help us achieve one of our sustainable development goals, that is of quality education in India, where people or students in different distant cities can get an opportunity to learn things from different prestigious institutes of India or over the world, which they can't get from their own traditional classes and all. So I would like to go on my next topic. That was should India have should India have one child policy? Yes, sir. I have my opinion that India should have one child policy, because India has a very huge population of something around 134 billion, which is very close to that of China of 138 billion. And I think that we are stressing more upon our resources. We are more stressing upon resources, and our future generation will have very less to get from it. So one child policy is also very important, because there are less number of jobs in India. We are facing a lot of employment issues, which can also be solved due to some government policies, but still we are facing a lot of employment issues. One child policy will help in it. And also, one child policy will also help in children to get better developed. Like if a parent has one child, he or parent may be able to provide better education, better quality food, and better everything to his child, in spite of providing that limited number of resources to, let's suppose, 2 or 3 children which he might have. So I think one child policy should be implemented, and one child policy will improve our condition, our condition of India, where we face a lot of poverty, unemployment, and a lot of lack of quality things. Okay, done it. Yes, sir. Amit, I come to now third section. You're a mechanical engineer, right? Yes, sir. Okay. I give you 3 topics. You choose 2 and start speaking on that. First topic which I give you is work study versus time study. Yes, sir. Second topic is different types of resources, industrial resources. Different types Yes, of sir. industrial resources. Third, my topic is third topic I give you from mechanical engineering. Yes, and sir. that is the strength of particular engineering material. Strength of particular engineering material. Yes, sir. I give you these 3 topics. You have to speak on any 2. Which one do you want to choose? Sir, I would like to speak on this industrial resources. Okay. And sir, the other one is strength of particular engineering material. Okay, you can start. Okay, sir. So different industrial resources can be human resources like direct labor, and other and indirect resources also, like watchmen, salesmen, or other.
and other resources might include raw materials and uh, different other resources, maybe like machinery, equipments, and and other resources. Okay, I'll be speaking on next question. That is what is strength of particular engineering material. So I would choose a material that is I would choose mild steel. So mild steel. If we talk about mild steel has a good ductile property, and good ductile properties is better in shear. Has a good shear strength, and mild steel. Actually, what is shear strength? And all mild steel has also a good wear and tear properties, and also corrosion resistant, and Okay, so that's it, Amit. yes sir. ओके चलो हम फीडबैक देते हैं आपका. सो आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. देखो आपने इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से 3 मिनट का किया आपने. यू वर हैविंग 5 मिनट्स. आई विल से कि आपने कंटेंट अच्छा बनाया है. आपने लिख के वो बना रखा है क्या? स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ना आपने? लिखा हुआ है? सर ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उसके हिसाब से मैंने बोला है. ठीक है, वो ठीक लगा, मेरे को अच्छा लगा आपका. लेकिन अमित अगर इसी स्पीड को तुम जो बोल रहे हो ना, अगर इसमें 2 चीज ले आओ, मतलब थोड़ा स्पीड कम कर लो, बोलने का पेस जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ वैसा पेस कर लो, और हर एक आइडिया के बाद, एक पर्टिकुलर आइडिया के बाद दूसरे आइडिया और पहले आइडिया के बीच में थोड़ा सा पॉज दे दो. हर सेंटेंस के बीच में थोड़ा पॉज दे दो, तो यही 3 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड ट्राई टू पुट समथिंग इंटरेस्टिंग इन योर एंटायर इंट्रोडक्शन. मतलब मैं पूरी इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मेरे को कुछ याद रहना चाहिए, और मेरे को याद वही रहेगा जो तुम इंटरेस्टिंग बताओगे. तो जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो कि जैसे आस्ता आस्ता बोल रहे हो, मतलब एक लाइन को ढंग से बता रहे हो. अभी जो आप बोल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि यू वांट टू फिनिश इट, यू वांट टू टेल मेनी थिंग्स टू द लिसनर. डोंट टेल मेनी थिंग्स टू द लिसनर, बट टेल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, so you can reduce the pace of your speaking. That is what is required. आस्ता आस्ता बोलने की ट्राई करो कि सर माय नेम इज अमित कुमार एंड आई बिलोंग टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया, and sir I want to tell you about my parents. So my father is this and my mother is doing this. Sir, I have one younger brother, and I got my educational qualifications in the beginning. I got my schooling from my native place. After that I joined my engineering college. उसके इस तरीके से एक थीम, पर्टिकुलर थीम को कंप्लीट करो, और उस थीम में कोई इंटरेस्टिंग चीज बताओ. उसके बाद दूसरे थीम पे चले जाओ. नाउ सर आई will tell something about my BTech project and internship which we have done in industries. So फिर उस थीम के ऊपर चले जाओ. तो पहली थीम और दूसरी थीम के बीच में थोड़ा सा गैप रखो और पेस थोड़ा सा स्लो करो, तो यही तुम्हारा 5 मिनट में बन जाएगा. Got the point? Yes. Okay. Now I think Salami sir will give feedback before I come back to my feedback. Okay, Amit, you took roughly 2 minutes to speak on all these 2 topics. Yes, sir. Okay, so that means roughly you took 1 minute for each topic. Yes, sir. And while speaking on the topics, you were very straightforward. Yes, sir. Like you don't have to be straightforward on the topic. Like yes, you are having digital education over traditional education, right? So yes, you spoke directly. Okay, you took a side of digital education, and you supported the digital education only. Okay, so that should not be. It should not be that way. You have to take a balanced opinion. You have to see the other side also, not just that. Right now we are promoting, or rather nowadays we are more exposed to the digital education, so that is the only solution. Okay. Yes, sir. Okay, let me just tell you what you explained and what points we could have added more on that. You said that okay, डिजिटल एजुकेशन जो है वो क्या है, वो बहुत सारी आज की डेट में जो है खासकर लॉकडाउन के पीरियड में बहुत हेल्पफुल हो रही है.
डिफरेंट एक्सपर्ट मेंटर्स हैं उनका हम ले सकते हैं, लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जो दूर लोग हैं इमेजिनेशन में हेल्प करता है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने लिया है यहाँ पर कि हाँ दोज पीपल हु आर ऑन द वेरी डिस्टेंट प्लेसेस दे कैन हैव आल्सो एक्सेस। ओके, ये एडवांटेज हैं, बट यू शुड हैव स्टार्टेड दिस वे आल्सो कि जैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बोल रहे थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या है कि टीचर इन ए क्लासरूम, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको टाइम मिल जाता, राइट। तो ऑलवेज सी फेस ऑफ इट, डोंट गो डायरेक्टली, थोड़ा सा आप क्या करो, उसका अगर बैकग्राउंड बन सकता है, थोड़ा सा जो आपको पता है ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा सा बोल दो, ताकि आप सो दैट यू डोंट फॉल शॉर्ट ऑफ द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव हैड स्पोकन अबाउट द ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड देन यू वुड हैव मूव टू द डिजिटल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन में जैसे आपको पता ही है, आप बोलते कि इन ट्रेडिशनल एजुकेशन टीचर यू आर हैविंग ए क्लासरूम सेटिंग एंड वेयर द टीचर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, राइट। एंड तो व्हेन टीचर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, तो एक टीचर का जो ऑरा है वो स्टूडेंट जो उससे इन्फ्लुएंस भी होता है, राइट। एंड टीचर कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथोडोलॉजी टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न इन ए डिफरेंट वेज, राइट। सो एट द सेम टाइम एक इमोशनल रिलेशनशिप है वो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, उसको भी टीचर जो है एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है एज पर द नीड ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप ये बोल सकते थे कि आपका, क्योंकि टीचर जो है इन केस ऑफ ए क्लासरूम सेटिंग, टीचर एक पर्टिकुलर पेज से ही पढ़ा सकता है, तो मे नॉट बी इन पोजीशन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। एंड फिर आप मूव ऑन कर जाते हैं इससे किसकी तरफ, डिजिटल एजुकेशन की तरफ। देन यू वुड हैव स्पोकन दैट विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ इट हैज बिकम रियलिटी कि हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह से जो है वो, अगर लोग पीपल हु आर स्टेइंग एट डिस्टेंट प्लेसेस, हम वहां तक जो है एजुकेशन पहुंचा सकते हैं थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी। और अब उसमें जो बेनिफिट आपने बताए, अब ये बेनिफिट अब ऐड कर देते हैं। आप बोलते हो कि हाँ बेनिफिट है, डिजिटल एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि आप जैसे यू आर ऑलरेडी हैविंग लाइक मेनी एक्सपर्ट मेंटर्स ऑन द सेम सब्जेक्ट, सो यू कुड हैव एक्सेस टू दोस डिफरेंट मेंटर्स, राइट। सो दैट वे एक कंसेप्ट लर्निंग आपकी जो है इजी हो जाएगी, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन योर लाइक कौन सा आपको मेंटर अच्छा लगता है, उसका टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, उसका कंटेंट एक्सेस करके आप क्या कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो। फिर दूसरा फायदा आप बोल सकते हो कि आप क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में जो टीचिंग मटेरियल है उसमें आप सिमुलेशन का यूज कर सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हो, सो दैट वे वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड लर्नर्स के लिए वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यू वुड हैव स्पोकन कि हाँ मल्टीपल टाइम्स आप उसको देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने क्लास में तो आपने एक बार पढ़ाया, राइट, बट इन केस ऑफ दिस यू कैन वॉच द सेम कंटेंट मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो दैट वे इट्स समथिंग यू हैव मिस्ड, यू कैन इजिली ग्रास्प दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड, और फिर आप बोल सकते हैं कि लर्नर जो है अपने पेस के हिसाब से चला सकता है। मान लिया टीचर ने एक पर्टिकुलर पेस से आपने पढ़ाया है, बट आपके पास आज की डेट में है कि एक पर्टिकुलर स्पीड को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो जो आपकी ग्रास्प करने की स्पीड है बेस्ड अपॉन दैट यू कैन एडजस्ट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन लर्न अकॉर्डिंगली। सो इससे क्या होगा, आपका वो इफेक्टिव हो जाएगा। अब फिर लास्ट में आपने थोड़ा सा सम अप करना है, साइड नहीं लेनी है। आप बोलोगे ठीक है टेक्नोलॉजी ने आज की डेट में इट हैज मेड पॉसिबल कि डिजिटल एजुकेशन जो है बहुत ही जो है वो इफेक्टिव हो रही है, एंड बट दिस इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द एज ऑफ नाउ for the traditional education and also the new technology. We cannot replace the role of a teacher with the technology, क्योंकि there is some perception is getting की perception बन रही है कि हाँ over a period of time हो सकता है टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस करे, so that is not the case. टीचर जो है वो that is going to make play the prominent role, बट यही है कि आपका टीचर जो है उस केस में क्या करेगा, he or she can make use of the technology in a better way so that एक बेटर डिलीवरी हो सके स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बोलते तो आपका जो टाइम जो है वो क्या हो जाता, यूटिलाइज हो जाएगा, समझिए आप। तो चीजें वही हैं जो आप जानते हो, बट द ओनली थिंग इज कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना, उससे क्या होगा आपका 2.5 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। Am I clear? Yes. Now let's move on to the second topic on which you spoke, that was should India have one child policy? ठीक है। अब अगेन you will not डायरेक्टली कम टू दिस टॉपिक दैट यस, आप डायरेक्टली आ गए कि हाँ इंडिया की जो है वन चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, फिर उसने बेनिफिट दे दिया। वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या होगा आपके ऑलरेडी सोच, तो आपने थोड़ा सा आप चले जाते कि सिचुएशन क्या है इंडिया में, सिचुएशन क्या है आज की डेट में। अगर वो सिचुएशन इफ यू वुड हैव बीन एबल टू स्पीक ऑन द सिचुएशन, तो उसमें थोड़ा टाइम तो आपका उसी में निकल जाता, थोड़ा सा एग्जांपल्स में निकल जाता, थोड़ा सा फिर वन चाइल्ड पॉलिसीज के बेनिफिट जो शुरू में ही आपने बता दिए और खत्म हो गया, वो लेटेस्ट स्टेज के लिए आपको उसको बता सकते थे,
right? So you would have started this way that India, as we already know, India is the second most populous country in the world after China, and as the geographical area is constant but population is too huge, so मतलब जो रिसोर्स और जो आपका पॉपुलेशन है उसका जो है वो प्रोपोर्शन सेम नहीं है. अगर यही कंडीशन चलती रही तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द रिसोर्सेज एंड मे बी we will have a different kind of problems that we are going to face in the coming future, right? So we should definitely plan to contain the population of India by taking the different steps. But since फिर आप बोलते कि देखो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, since India is a democratic country, so therefore we cannot enforce the laws. We cannot make a policy, government cannot make a policy where like you should have only one child, parents should have one child, right? फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि इंडिया, in case of China definitely yes, they implemented that one child policy successfully, but the form of the government over there is quite different. It is not a democratic form of government, so it may not be possible for us, not us, but for the government to implement the one child policy, right? But yes, definitely we can take many steps to encourage the parents to have a one child, right? So we can educate them, we can educate them regarding what are the benefits that you're going to have if you are having one child. You can let them know that what kind of situation we are going to have to face in the future. So एक तो है एजुकेशन पार्ट दैट यू हैव टू. सेकंड पार्ट इज द पॉलिसी इनिशिएटिव, जो कि ऐसे कुछ गवर्नमेंट हैज टू टेक सम पॉलिसी इनिशिएटिव्स वेयर दे हैव टू इंसेंटिवाइज दोस पेरेंट्स हु आर हैविंग लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, right? Yes, so that way, if we will move in that direction, I think that will be more proper way of moving forward rather than making a policy on the part of the government which is not practical because of the kind of form that exists in India. Right? So फिर बाद में अगर आप कहना चाहते हो तो फायदे क्या हैं, you could have enumerated, आपने बोला वन चाइल्ड अगर है तो you could have enumerated all those कि हाँ उससे क्या होगा, आपका हेल्थ के केस में एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे and all that you have spoken, and एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बोल दिया. तो that way you should have spoken so that जो आपका टाइम है 2 से 2.5 मिनट का वो कंज्यूम हो जाता. ठीक है. अगेन जितने भी बच्चे हैं, जितना ज्यादा कर जो जिनका हम मॉक ले रहे हैं, उनके साथ दिक्कत यही आ रही है क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन. वो यही सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन है उनको और उसी लाइन पे आंसर कर रहे हैं. शुरू में सोच भी नहीं रहे हैं, राइट? टाइम लो शुरू में 5-10 सेकंड जो भी लेना है सोचने के लिए, एंड उस वक्त सोचोगे कि मैंने किस डायरेक्शन में मूव करना है, देन इट विल बी बेटर. राइट अमित? सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क ऑन दिस? नो सर. Okay, so okay, try this way for every topic, particularly उन टॉपिक्स में जहां पर आपको पता नहीं है. जिसके बारे में पता है उसको तो आप ऑब्वियसली बोल ही पाओगे, बट उन टॉपिक्स में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया तो उसमें डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई दिस वे. दैट विल बी द राइट अप्रोच. अदरवाइज आपका खत्म हो जाएगा वो आधे 1 मिनट में, 2 मिनट बोल पाए आप मैक्सिमम, जबकि आपने 5 मिनट बोलना था, राइट? यस सर. Okay, now we can move on to the feedback of next section. Okay. So अमित 3 क्वेश्चन पूछे थे. थर्ड सेक्शन तो पूरा तुम्हारा तरफ फ्लैट चला गया, कुछ बोला ही नहीं तुमने थर्ड सेक्शन में. वो तो तुम्हारा अपना इंजीनियरिंग का सेक्शन था. yes. अमित व्हाट हैपेंड? सर एक्चुअली मुझे सर एकदम डेटा नहीं याद आ रहा था, मतलब एग्जैक्ट. एनीहाउ टॉपिक्स क्या पूछे गए थे आपसे? सर एक तो टॉपिक पूछा गया था किसी एक इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, और दूसरा टॉपिक ये था कि इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं, और तीसरा था वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी. हाँ, वर्क स्टडी एंड टाइम स्टडी. अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो एक सब्जेक्ट है यार पूरे का पूरा, उसके बारे में तो बोल ही सकते थे. तो आप बोल सकते हो कि सर स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंजीनियरिंग मटेरियल इज बेसिकली इट्स प्रॉपर्टी and it is the maximum resistance which can be induced in that material before it fails, and the stress induced in the material is nothing but the resistance force induced in that material per unit cross section area. सर मुझे लगा इस क्वेश्चन में कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बताना है. तो बता दो, एक मटेरियल के ऊपर भी आ जाते हैं. जैसे अगर सपोज एक मटेरियल के बारे में, हाँ, पर लेकिन क्या होता है कि जब टॉपिक तुम्हें दिया जाता है ना कोई भी, तो पहले उसकी डायसेक्शन करो. दैट इज द वेरी सिंपल रूल. एक सकलानी सर ने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया कि जैसे टॉपिक मिलता है तो इमीडिएटली जंप मत करो उसको आंसर करने के लिए. इवेंचुअली हम 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 5 मिनट तो कोई बोलता नहीं है, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में. फर्स्ट में तो फिर भी तुमने रिहर्सल कर लिया, 5 मिनट इंट्रोडक्शन दे दिया.
सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में अभी तक किसी भी बच्चे ने 5 मिनट पूरा यूज नहीं किया, और उसमें भी बैलेंस बनाना है 2.5 मिनट्स ईच टॉपिक। तो कोई भी नहीं बोल रहा है, तो कम से कम ये करो ना, 30 सेकंड का ब्रेक ले लो और सोच लो, पेपर पे लिख लो कि साहब मेरे को क्या बोलना है। तो अगर आप एक मटेरियल के बारे में भी बोलना चाहते हैं तो यार माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो पढ़ा ही हुआ है ना आपने। उसके बारे में तो कुछ भी बोल सकते थे कि सर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होती है, सर ऐसे निकालते हैं यार। कुछ तो बोलते हैं, मतलब ना बोलने से तो 1000 टाइम बेटर है कुछ ना कुछ बता दिया। और दूसरा, आपने जो नाम सुना उसके नाम को डाइसेक्ट कर दो, उसके नाम से भी तो मीनिंग निकल जाएगा ना कुछ। कि जैसे स्ट्रेंथ है तो होती क्या स्ट्रेंथ, मटेरियल क्या होता है, इसी के ऊपर तुम्हारा टॉपिक चल जाएगा यार, कुछ ना कुछ बोल पाओगे। जनरिक टॉपिक है ना। तुमने क्या सोचा था, क्या क्या टॉपिक पूछा है? सर मुझे ऐसा लगा कि माइल्ड स्टील की मतलब प्रॉपर्टी, मतलब मुझे माइल्ड स्टील की वैल्यूज वगैरह बतानी, मतलब कि स्ट्रेंथ में यार कितनी स्ट्रेंथ होती है। वैल्यूज तो कभी भी नहीं बताएगा वो। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल मींस वो बताएगा होती क्या है। हाँ तो सर मैं यही सोचने लग गया, तो इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। नहीं तो गलत है ना। माइल्ड स्टील की अगर तुम बताना हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तुम्हारी टिप्स पे है। तुम जानते नहीं हो कि यील्ड स्ट्रेंथ लोअर यील्ड पॉइंट पे निकलती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकलती है, और वो सारी चीज तो तुम्हें पता ही है, राइट। तो मैं उसका आंसर तुम्हें दे दूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज द मैक्सिमम स्ट्रेस व्हिच वी कैन इंड्यूस इन द मटेरियल and till material fails. Now in engineering the failure simply means permanent deformation or yielding of the material. So if I give you example of a material, typical useful engineering material, that is mild steel, and if we want to find out its strength, then there is a experiment which we can conduct, that is called universal testing machine, tensile testing, right? So there we take a small piece and we subject it to pulling load or some kind of tensile loading, and after some time it starts, the deformation is produced as proportional to the load applied. Then a stress strain diagram is plotted, and from the stress strain diagram we can find out some typical points corresponding to which we can find out the strength points. ऐसे से बोल देते सारा तो हो जाता फॉर्मेट तुम्हारा। तो अमित, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है और कुछ घबराना नहीं है, बोलना है इस बारे में, ये प्रैक्टिस कर लो यार, ये सिंपली हो जाएगा, कोई ट्रबल नहीं आएगा इसमें, राइट। दूसरा आ गया आपका टॉपिक, मैंने पूछा था व्हाट वाज द टॉपिक, कैन यू टेल मी? इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। हाँ, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। बहुत बार मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दो चीज आ गई। तो पहले इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर रिसोर्सेज के बारे में बता दो। इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। Now what is industry? Industry is basically sum total of, or it is the combination of all the resources, components, processes, tools, devices with the sole purpose to basically add the value to some product or service. So in the industry there is a raw material which enters that particular industry, and the finished product is coming out of that industry, and in between value is added to that particular basically product. Now there are different kind of resources, and we can divide those resources in M. M for material resource, then money as a resource, manpower resource, machine resource. Now whatever example you take in industry, whatever we have to produce, these are the typical resources which are required. So there will be requirement of machine, there will be requirement of some kind of raw material which will be subjected to particular machine, and there will be manpower which will be working on that, and to add to that some kind of monetary resources also required. So industry में there is a optimum use of all the resources is to be done in any industry to add the value to that particular product और सर्विस। जिस तरीके से हमने जाना, तो रिसोर्स के बारे में याद रखना एम। इंडस्ट्री के बारे में याद रखना टूल्स, डिवाइसेस, सिस्टम, प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट इनटू आउटपुट किसका, प्रोडक्ट का या सर्विस का, ऐसे याद रखना। तो ये हमने क्वेश्चन दूसरा पूछा था। तीसरा क्वेश्चन आ गया वर्क स्टडी, टाइम स्टडी। अब समझ लो वर्क स्टडी, नाम फोकस करो। वर्क स्टडी, वर्क मीन्स जॉब, स्टडी मीन्स जो तुम काम कर रहे हो उसको स्टडी करो, जो तुम काम कर रहे हो। अब जैसे सोचो तुम इंडस्ट्री में कोई काम कर रहे हो, तो मेरे को तुम्हें उस काम को स्टडी करना है। तो उस काम को स्टडी क्या करना है मेरे को उसमें, कि जैसे तुम काम कर रहे हो, जो मेथड है तुम्हारे काम करने का वो सही है भी कि नहीं, गलत तरीके से काम तो नहीं कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर पे बैठे हो तुम काम कर रहे हो, अब कंप्यूटर पे बैठ के तुम ढंग से काम कर भी रहे हो कि नहीं, मतलब एर्गोनॉमिक्स ठीक है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हो, लाइटिंग ठीक है, वेंटिलेशन ठीक है, वो सारा। मतलब आई वांट टू स्टडी द मेथड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग, इज दिस अप्रोप्रिएट मेथड और नॉट। नंबर 2, आई वांट टू मेजर इट ऑल्सो, कि पूरे दिन में तुम्हें कितने घंटे का काम कर रहे हो और कितने घंटे कर सकते हो। वर्क मीन्स जॉब, एंड वर्क स्टडी में दो चीज आती है। वर्क स्टडी में तुम्हारे पास आता है
method study and work measurement. So I can divide work study into two parts. One is method study, another is work measurement. Method study में I measure the method of doing work, and work measurement में I measure the work in time, how much time you are taking. And work measurement is further of two types: time study and motion study. Time study में I measure the time you are going to take for doing some particular work. So sir, am I doing work properly? Answer is, I want to study it in two perspectives. Number one, method, the method of doing work which you are following. Second is work measurement, how much time you are going to take to do that work. So work study is made up of method study and work measurement. Work measurement further is time study and motion study. अब देखो definition कैसे देना है. Work study is the systematic examination of the method of doing some particular work or activity, so that after analysis of the method of doing that work, I can suggest some kind of improvement in doing the work. And that improvement can be suggested in terms of time taken to do that work also. So when I analyze this work being done, I can set up some standard of performance of the activities being done. And every employee should do that work by following that particular standard. So analysis of the present method of doing a work systematically in order to develop a new better method is called work study. And in the work study, you need to measure the work content being done in terms of its time taken. That is called a time study. What is the main purpose of work study? To increase the productivity, to increase the efficiency, to help the employee to fix a standard way to do that work. So whenever a new employee comes, I tell him, see, this is the way you have to do, and this is the time you should take, because a qualified good worker takes 1 hour to do this. You should also take 1 hour to do this. I give you very raw example of coaching industry or teaching. A new teacher comes. I want to tell him, okay, strength of material you should teach in 40 hours, because strength of material as a subject can be completed in 40 hours. That is called, yes, 40 hours. That is called work measurement. Suppose he is finishing that entire strength of material in 10 hours, or he is taking 100 hours. That means he is not doing properly. So I have fixed up some kind of performance. I have said, okay, this is the time it is going to take. So that is basically the work measurement part. So I will fix up a reference. I will fix up a proper method of doing that particular work. This will help me to decide later on what are the incentives I am to give to somebody who is doing good. So what is the benefit of work study? It increases productivity, increases efficiency, reduces the cost, improve the work layout, manpower planning is proper. I can give good salaries to employees if they are doing good, better working conditions, reduced material handling cost, industrial relations improve, job satisfaction in the employees improve. So sound incentive scheme can be given. These are the benefits of that. So work study is made up of two parts: method study, work measurement, or time study. Method study में you study the method of doing work, and work measurement में you measure the time taken to do that work. अब ये वर्क स्टडी मेथड स्टडी एक टॉपिक है जो मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ढंग से आपने गो थ्रू करना है. ठीक है मित्र? सो बाकी ये जितने टॉपिक्स हम करवाते हैं बाकी बच्चों के भी उनको भी याद रखना, और मैंने आपको फीडबैक दिया है. सो कुछ ना कुछ हमें बोलना है. फाइन. ओके सर. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर. ओके, चलो ऑल द बेस्ट अमित. ये अपनी क्लिप जो भेजेंगे उसको सुन लेना. फाइन. ओके सर, थैंक यू सर. ओके.